guys, welcome back to my channel. Literally posting here after 4 long months, but this was honestly the most beautiful break I had ever taken. I have a 4 months old daughter now and it really feels great to say this. But anyway, coming to the point, I had posted this reel on my Instagram wherein I had made a lamp using a matki. काफी सारे लोगों ने बोला that I should create a long form video for this one so that people can get the step by step procedure on how I made that. It was really easy and it was very cheap. I'll tell you how much money I had spent on this towards the end of the video. So without any further delay, let's make the lamp. So first thing, I used this मटका. इस मटके का advantage ये था कि इसमें एक टैप था in front. So I just kind of removed the tap and exposed the hole like this. Basic idea ये है कि मटके में एक होल होना ज़रूरी है जिसके थ्रू हम लैम्प का वायर डाल सकें. अगर आपके पास ऐसा मटका नहीं है तो यू कैन ईजिली मेक अ होल यूजिंग अ नाइफ ऑन अ रेगुलर मटकी. इट्स really easy. Then I painted the whole thing with maroon color. This is ancient paint का glossy finish enamel paint. I wanted a Rajasthani kind of a vibe for this lamp cause हमारे living room का look थोड़ा वैसा ही है. So I drew some tribal figures on it like this. Now let's make a lampshade. For the lampshade ये दो embroidery hoops लिए थे मैंने and उसके अंदर वाले ring को use किया है basically. I chipcowfied some ice cream sticks on it like this. I'm using a heavy duty Fevicol Heatex glue for everything here. Then I took these very old dining table placemats. ये placemats we'll use to make the lampshade. So I'm sticking the mat around both the embroidery hoops. इस पे clips लगा के I'll let it dry for around 2 hours. Then our lampshade is ready and extra support के लिए मैंने दो wooden pieces भी चिपका दिए थे नीचे so that bulb को एक support रहे अच्छे से. हाँ, मैंने एक छोटा सा टेराकोटा वास भी लिया था एंड इसमें मैंने नीचे से होल कर दिया था. ये बेसिकली इट विल एक्ट एज अ नेक फॉर द लैम्प, थोड़ा अच्छा हाइट देने के लिए. नाउ लेट्स असेंबल एवरीथिंग. आई टुक अ वायर कॉर्ड. इसमें एक साइड प्लग लगा हुआ था एंड एक साइड बेयर है. ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको मिल जाएगा इजीली. सो बेयर साइड को आई विल पुट इनसाइड द होल एंड देन इनसाइड द वास लाइक दिस. नाउ विल पुट द लैम्प शेड एंड वायर को उसके थ्रू निकाल के विल यूज दिस राउंड फैन प्लेट. आपने देखा होगा ये पंखे के साथ सीलिंग पे ऐसे शीट लगाई जाती है. ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी. ये बहुत ही सस्ती मिल जाएगी किसी भी हार्डवेयर शॉप पे. बट इफ़ यू डोंट हैव दिस आई थिंक यू कैन ऑल्सो यूज CD इंस्टेड. वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया ऑल्दो बट आई थिंक इट विल वर्क. नाउ विल पुट द बल्ब होल्डर एंड कनेक्ट द वायर विद द बल्ब होल्डर. इट इज़ वेरी ईजी टू डू. ये मैंने खुद से कर लिया था विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर. एंड मैंने ये लैम्प शेड को परमानेंटली स्टिक कर दिया था वास के साथ सो दैट वो एक जगह पे रहे एंड ज़्यादा हिले नहीं. एंड दैट इज़ इट. इट वॉज रियली ईजी टू मेक दिस and it turned out so pretty at the end. I hope that you like this video. If you ask me how much money I had spent to make this lamp, it was really the electric cord and the bulb ka cost that I had to pay. It was around 120 or 130 bucks. And those embroidery hoops I already had with me. If you were to buy those embroidery hoops as well, then I think it would cost you 60 bucks more. So you can create this huge lamp for around 180 rupees and that is it. It looks really pretty in the living room. I hope you try this and if you do, please let me know in the comments section below and I'll see you in the next one. Bye.